Hello everyone, welcome to another video. Today I will show you how I make penne carbonara. So let's start. यहाँ पे हमारे पास है पेने पास्ता, बेकन, एग, गार्लिक, बटर, वाइट पेपर, ओरिगेनो, सॉल्ट, ऑलिव ऑयल, क्रीम, सम पार्मेजान। तो गाइस हम लोग पास्ता बॉईल करना शुरू करते हैं, बट एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी पास्ता बॉईल करते हैं उसमें सॉल्ट और ऑयल हमेशा होना चाहिए, एवरी टाइम। तो पानी यहाँ पे हमारा बॉईल हो रहा है पास्ता के लिए। अब हम लोग सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे ऑयल और सॉल्ट। इसके बाद ये अराउंड फॉर 2 पोर्शंस पास्ता है। और इसको हम लोग ब्लांच करेंगे अबाउट फॉर 8 to 10 मिनट्स। Meanwhile, तो पास्ता के लिए मैं 2 से 3 क्लोव्स गार्लिक के चाहिए होंगे, तो वो मैं चॉप कर लेता हूँ। तो कार्बोनारा के बेस के लिए हम लोग 3 चीज़ें यूज़ करेंगे, जो है एग योक, क्रीम और पार्मेजान। इन तीनों को हम लोग साथ में एक बाउल में निकाल के और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस बेस को बनाने के लिए मैंने बोल में लिया है एग योक। इसमें मैं डालूंगा थोड़ा क्रीम और थोड़ा पार्मेजान। अब मैं इसे करूँगा मिक्स। eventually, तुम्हारा पास्ता जो है वो बॉईल होकर रेडी हो गया। अब हम इसको निकालेंगे दूसरे कंटेनर में ताकि ये ओवर बॉईल ना हो जाए। ये पास्ता वाटर जो है हम लोग फेंकेंगे नहीं, इसको हम लोग यूज़ करेंगे while मेकिंग आवर पास्ता। तो सबसे पहले हम लोग इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल और 1-2 क्यूब्स बटर। हल्का सा गरम करना है इसको। Now we'll add our garlic, इसके बाद हम लोग ऐड करेंगे बेकन। गार्लिक और बेकन जो है दोनों कुक हो गए, तो हम लोग ऐड करेंगे इसमें पास्ता।
salt, some oregano and white pepper. Leftover butter, now we are gonna add this mixture. जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो हमें इसको रेंज से हटाना है, ये गर्म नहीं होना चाहिए। तो ये गर्म होगा तो इसके अंदर एग कुक हो जाएगा, जो कि हमें नहीं करना है। एग हमारा कुक नहीं होना चाहिए। Some Parmesan on top, and it's ready to plate. तो हम इसकी प्लेटिंग स्टार्ट करते हैं। Now for garnish, we'll use some Parmesan. And some olive oil. Thanks for watching my video. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।